TKS Elangovan of the DMK says alliance with the Congress is strong. Also says fight is with the biggest enemy, which is the BJP. So now what is there? Here the elections are over. Maybe they are going to face elections subsequently. So here the problem is not there, and Rahul Gandhi is very close to our leader, and there may not be any issue between the Congress and the DMK as far as this is concerned, because we are opposing a more dangerous enemy. They want to convert this country as a single religious country against the fundamental right, Article 25 of the Constitution. Let's go back to Sabyasachi. Sabyasachi, so DMK's response is that the election is over in Tamil Nadu, but as far as this controversy is concerned, they seem standing strong with the Congress party. Well, absolutely. See, the DMK says that the polls in the state of Tamil Nadu is over. But clearly at this particular time, different versions are coming in. The Congress party says that they welcome the statement of Revanth Reddy. In fact, they support the statement that has come in from the Chief Minister of Telangana. And the DMK, on the other hand, is trying to downplay the entire thing. See, the Congress party says that it is a party of it is a party that follows the ideology of Mahatma Gandhi. Whereas whether it's DMK or any other political party, if they make any sort of statement, it is their own mindset. But any statement coming in against anybody's religion or dharam should not be supported. And the Revanth Reddy is absolutely right to condemn the statement of Udayanidhi Stalin. Meanwhile, the BJP says that this is nothing but the strategy of the Congress party, as the Congress party has been quite late in responding to it. See, the BJP from day one has been questioning on the silence of the Congress party, specifically the top leadership of the Congress party, be it Rahul Gandhi, Sonia Gandhi or Priyanka Gandhi Vadra, them not giving any sort of statement regarding the DMK. Well, yes, absolutely. Let's once again listen to what Revanth Reddy said when he was asked about the silence of the Congress party, and he says, take my version on record. I am condemning it. जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है. कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंडसेट है. उनका माइंडसेट वो उनको बोलना है. पार्टनर है वो ना. तो क्या? और कांग्रेस पार्टी से परिवार में भी अलग अलग सोचदार रहता है, अलग अलग सोच रहते हैं, अलग अलग बात होते रहते हैं. भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों को मैं दिखाता हूँ, परिवार में दो पार्टी में है सो वाले. हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो दे आर इन डिफरेंट पार्टीज इन भारतीय जनता पार्टी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोई इंडिविजुअल कोई कुछ के उनके माइंडसेट से कुछ कहा तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, उसके लिए हम जो बोलना है वो बोलेंगे. आप उस अलायंस पार्टनर, उस सरकार के पार्ट हैं. तो क्या कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं. नहीं, कुछ बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं. उनका विचारधारा किसी ने बोला नहीं. कांग्रेस पार्टी से मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना. मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? आप कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म के बारे में कहा था वो गलत है? बराबर गलत है. किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो वो ठीक नहीं है. आपको लगता है इसका असर कांग्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर आदमी का, हर जाति का, हर धर्म का अलग अलग नियम है. अलग अलग नियम अलग अलग लोग मानते. हमारा नियम हम मानते, उनका नियम उन मानते. मगर किसी के नियम के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ कहा तो वो ठीक नहीं है. वैसे लोगों को पनिशमेंट देना जरूरी है. तो आप वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू धर्म हो, तो उदयनिधि स्टालिन को पनिशमेंट देना चाहिए. जरूर देना है. क्यों नहीं? अच्छा, पनिशमेंट देना चाहिए. हाँ, जो सिस्टम चलना है, सिस्टम तो प्रिवेल हो जाना है. सिस्टम तो मोदी जी डिमोलिश करके छोड़ दिए. Well, we also have a reaction coming in from the BRS. It is in fact a suggestion for the Congress. BRS calls this matter sub judice, and as far as Mr. Reddy is concerned, BRS says that he should refrain himself from giving such statements. Revanth Reddy's statements on Udayanidhi Stalin's comments show us that not everything is hunky-dory in India alliance. While we might not agree with Udayanidhi's comments, the matter is sub judice. Revanth Reddy should have refrained himself
because his Supremo Rahul Gandhi himself didn't comment anything on this. But Revant was very enthusiastic in condemning and denouncing and demanding punishment for Uday Stalin, because we believe he is cozying up to BJP and he is towing the line of his self-proclaimed Bade Bhaiya Narendra Modi. Because you have seen, while Rahul Gandhi criticizes Narendra Modi, Revant Reddy says Modi is my Bade Bhai. While Rahul Gandhi denounces Gujarat model, Revant Reddy says he wants to implement that in Telangana. While Rahul Gandhi criticizes Adani, Revant Reddy welcomes him with open heart. So, all these indicate that